Hello everyone. So this is a new video from the calculus series where we have discussed what is calculus, where we have also discussed how to visualize differentiation और इस बार मैं आपको बताना चाहता हूं कि how do you visualize integration. What does integration mean for you and how integration helps you in solving things that were pretty much unsolvable by normal methods. Okay, so let's get into it and let's have fun. So this is a graph of the line y equals to x. We know very well that y equals to x makes an angle of 45 degrees with the x-axis. The slope is 1, of course, and we want to find out something. What do we want to find out? We want to find out the area that this graph makes from x equals to 0, so to let's say x equals to 5. So this is x equals to 5 and we want to find out the area that lies within it. One possible way of finding out the area is actually very simple, that you know the formula. So via formula, area क्या होगा? Area will be equals to half times base times height. Correct? And half times the base is 5 and what is the height? The height is the value of y, and since y is equals to x as given in the equation of the line, we can say that the value of y is also equals to 5. So your area becomes equals to 25 by 2. But this video, ये जो वीडियो है ये इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मैं आपको ये समझा सकूं कि आप एक ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं. मैं इस वीडियो को आपको ये समझाने के लिए बना रहा हूँ कि हम एक एरिया को या फिर हम इस एरिया को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वाया मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यूजिंग द बेसिक मेथड. सो लेट्स डाइव इनटू इट. द अदर वे टू फाइंड अ एरिया could be taking a lot of thin rectangles. Let me explain this to you. We could take this a thin rectangle here. I could copy it. Let me copy it and paste it. And now I have another rectangle just by the side, but I'll reduce the height of the rectangle. Let me do this properly. And then I can have another rectangle over here, and I can again reduce the height so that it just matches up with the line. And when we finish this, the figure would look something like this one. Now let me enlarge the figure a bit so that you could understand what is happening here. So you see, I have distributed this entire area into blue and white stripes, blue and green stripes. Can you see the blue and green stripes? Of course you can see the blue and green stripes. These are your blue stripes and these are your green stripes. Now an interesting thing here is that the width of every stripe is same. The width of every stripe is same, and let me call that width as dx. And whenever I put d anywhere, it simply means that the length is very small. D is not a multiplier. D is something that tells us that the value of the length, that x, is very small. So that would mean dx. Now all I can say is this, that the total area is the sum of areas of blue and green stripes. Now if you are very keen enough, you would like to answer this. What about this area here, the red ones? I can actually fill them up. This area here, can you see the red area that is being generally filled up? I think you can see the red area here that is generally being filled up. Stepwise area, in every step there is some missing area that I am filling up with red. And this area is, this area is actually not being counted. तो आप ये बोल सकते हो कि सर आपने ये एरिया तो काउंट किया ही नहीं. तो उसका लॉजिक ये है कि अगर मैं अपनी स्ट्राइप्स की विड्थ को और कम कर दूं,
अगर मैं अपनी स्ट्राइप्स की विड्थ को बहुत कम कर दूं तो इस एरिया को मैं बहुत छोटा कर सकता हूं. आई कैन मेक दिस एरिया टू बी नेग्लिजिबल. अगर मेरी स्ट्राइप्स की एरिया ज्यादा होगी, लेट मी डिस्कस दिस. अगर मेरी स्ट्राइप्स की थिकनेस ज्यादा होगी, अगर मेरी स्ट्राइप्स की थिकनेस ज्यादा होगी, लेट मी ड्रॉ रफ डायग्राम हियर and this is my line y equals to x. So this is a thick stripe here, this is a thick stripe here, this is a thick stripe, this is a thick stripe. अगर मेरी स्ट्राइप्स की थिकनेस ज्यादा है तो मैं ये देखूंगा या मैं ये पाऊंगा कि ये जो एरिया जो बच जा रही थी वो एक्चुअली में काफी, ये हमारी जो एरिया बच जा रही थी, यहाँ पे मैं इसे दिखा देता हूँ, ये हमारी जो एरिया बच जा रही थी, दिस वाज अ बिग एरिया, एक्चुअली दिस इज अ बिग एरिया. लेकिन आप जैसे जैसे अपनी स्ट्राइप्स की विड्थ कम करते जाओगे, यू आर गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, यू नो, areas that are being lost. This red area is what we can say is the area lost. ऐसा हम कह सकते हैं that this is the area lost. But if you are taking thinner and thinner stripes, then the area lost will be lesser and lesser. So we have taken the length of each stripe to be very small, that is dx, as you can see in the diagram here. The length of each stripe is dx, and I want to find out the complete area of the stripes. So how do I start? So these are all rectangles, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. These are all actually rectangles, and if we want to find out the the area of each rectangle, we have to do two things. First, let me copy this. So if I want to find the area of this rectangle, I first need to find out the height, and then I need to find out dx. Actually I don't need to find out dx, वो मुझे पहले से पता है. So if I want to find out the area of this rectangle, that area is going to be y into dx, and then we have to add the areas of all rectangles starting from x equals to 0 ending to x equals to 5. Now how do we find out the value of y? So to find the value of y, we know that the equation of the line is y equals to x. So whatever will the value of x be, जो भी x की वैल्यू होगी, मान लो यहां तक जो भी x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू exactly उतनी होगी. There will be no difference at all. The value of x will be actually equals to the value of y. इतनी बात आपको समझ में आ गई? Because the line is y equals to x. अगर हमारी line y equals to x square होती, then it would have been different. But in this case, the value of x and value of y will be same. And then we come back to find out the value of x. So how do we find out the value of x? To find out the value of x, it's actually very simple. We start with first rectangle. The width of the first rectangle is negligible, it is just dx. So the value of y will also be dx. So the area of the first rectangle will be dx into dx, since both x and y are equal. Now let's try to understand the area of the second rectangle. In order to understand the area of the second rectangle, first हमें ये देखना होगा कि x का वैल्यू कितना है. तो आप अगर आप इस डायग्राम को मैं और बड़ा कर दूं तो आप ये पाओगे कि x का वैल्यू है dx प्लस dx. तो dx प्लस dx और मतलब y का वैल्यू भी हो गया dx प्लस dx, बिकॉज अमाउंट ऑफ x एंड अमाउंट ऑफ y आर इक्वल. सो dx प्लस dx, so the value of y is also 2dx. So if x is 2dx, then y is 2dx. If x is 3dx, then y is 3dx. So the height of this rectangle is 2dx, but the width, ध्यान देना, इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई 2dx है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है, width है, वो सिर्फ dx है. तीसरे वाले रेक्टेंगल में इसकी ऊंचाई 3dx है, लेकिन इसकी चौड़ाई सिर्फ dx है. तो हर एक रेक्टेंगल की चौड़ाई सिर्फ dx है, लेकिन उसकी ऊंचाई जो है वो वेरी करती जा रही है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. अगेन, the first rectangle has got length dx, width dx. The second has got length dx and height 2dx. The third one has got length dx and height 3dx. The fourth one has got length 4dx, length dx and height 4dx. तो हर एक का जो x axis में length है, every rectangle has got the same length. Let me write this down here.
this is also dx, this is also dx, each one of them is actually dx, कोई सा भी पकड़ लो, बस उसकी हाइट बढ़ती जा रही है. सो ये ध्यान रखेंगे. लेट मी कम बैक टू काउंटिंग एरियाज. ऑलराइट, तो सेकेंड वाले रेक्टेंगल के केस में जो एरिया होगी वो होगी 2dx और विड्थ उसकी dx. तीसरे वाले रेक्टेंगल का 3dx विड्थ dx. nth रेक्टेंगल का ndx और विड्थ dx. अब हमें कुछ नहीं करना है टोटल एरिया के लिए. इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ ai फ्रॉम i का वैल्यू 1 से लेके n तक, और हमें इसे ऐड कर देना है. अच्छा, इससे पहले कि हम ऐड करना शुरू करें, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ. वो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर हर एक रेक्टेंगल की विड्थ dx है, dx 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 dx, और ऐसे n रेक्टेंगल्स हैं, देयर आर n रेक्टेंगल्स, अगर ऐसे n रेक्टेंगल्स हैं तो n dx की वैल्यू हो जाएगी 5. Why 5? Because if you add the width of all the rectangles, then the sum will give you the total width across the region, and that is equals to 5. So n dx equals to 5. More importantly, dx equals to 5 upon n. अब एक चीज का ध्यान रखो कि अगर आप कम रेक्टेंगल्स रखते हो, जैसे इस डायग्राम में, जैसे यहाँ पे देखिए आपके रेक्टेंगल्स हैं 1 2 3 4 5 6 रेक्टेंगल्स हैं. तो अगर आप 6 रेक्टेंगल्स रखते हो तो हर एक की विड्थ कुछ सब्सटैंशियल विड्थ है हर एक के पास. लेकिन अगर आप विड्थ को कम कर देते हो, इफ यू मेक द विड्थ टू बी नेग्लिजिबल, देन द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विल बी टेंडिंग टू इंफिनिटी. ये आपको ध्यान रखना है. द नंबर ऑफ स्ट्राइप्स विल एक्चुअली बी टेंडिंग टू इंफिनिटी. सो इफ, इसको मैं अलग से लिख देता हूं, इफ dx is negligible, if the width of each stripe is almost 0, then the number of stripes is actually tending to infinity. That is very important for you to understand. If the width of each stripe is tending to 0, then the number of stripes will be tending to infinity. इतना अगर आपको समझ में आ गया, then we can begin counting the areas. चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज में. ओके, तो एरियाज हम कैसे कर रहे थे? a1 हमारा कितना था? a1 हमारा था dx स्क्वायर्ड, a2 हमारा था 2dx स्क्वायर्ड, a3 हमारा था 3dx स्क्वायर्ड, और ऐसे करके हमारा an था n dx स्क्वायर्ड. अब हमें इसे ऐड करना है, समेशन ऑफ ai फ्रॉम i का वैल्यू 1 से लेके n तक. तो dx स्क्वायर्ड 1 plus 2 plus 3 up till n, and what do we get? We get dx squared into n plus 1 divided by 2. That is a standard addition formula that you have studied in your class, maybe 9th or 10th, and we are not fussing over that. But the most important point here is this, कि dx का value है 5 upon n. So I want to replace this thing by 5 upon n. So that will be equals to 25 upon n square times n into n plus 1 by 2. Now what are we going to do? ध्यान से देखो, n और n square में एक कट जाएगा, n बचेगा. Then we can write it as 25 by 2 into n plus 1 divided by n. One final step, just the last step. What are we going to do next? 25 by 2 into 1 plus 1 by n. Now we know that n is tending to infinity. So 1 by infinity is approximately equals to 0, or we can say it is tending to 0. So 1 by n, we can say 1 by n is actually tending to 0. So if we take our stripes to be very very small, the area is closer and closer to 25 by 2. और याद करो, ये वही एरिया थी जो कि आपके फॉर्मूला लगाने की वजह से आई थी, एंड देयर इज प्रैक्टिकली नो डिफरेंस बिटवीन द टू एरियाज. ओके, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज द फंडामेंटल्स बिहाइंड इंटीग्रेशन. क्या काम है इंटीग्रेशन का? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट
aspects of integration. There are two things about integration that you must understand. The first thing is that integration means addition of very small areas. Like for example, over here, instead of doing direct addition, we could have actually done integration using formula, but I'll discuss formula later on. But here, what do we mean by integration? Integration means addition of very small areas. So whenever we are adding small areas under a graph, we are doing integration. Okay. All right. Let's move on to how we do it using formula. Now, how do we find out the same area using formula? So we have the function y equals to x. I can even draw the graph if you want. And I have to find the area from x equals to 0 to x equals to 5. This is the area that I have got to find out. Okay. Now, how do I find out this area? In order to find out this area, by using integration formula. By using integration formula. Now, how do we use integration formula? There is one important formula that you should remember. और मुझे पक्का पता है कि आपको याद भी होगा कि स्कूल में भी सिखाया गया होगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आप जाते हैं तो वहाँ भी सिखाया गया होगा. The one important formula that I know about integration is x का power n dx is actually equals to x का power n plus 1 upon n plus 1. We will use the same formula. Okay, there is one condition to this formula, that n is not equal to minus 1. Other than that, everything is totally fine. Apart from minus 1, all other n's are valid, or we can say all real values of n except minus 1. How do we find the area? Using the same concept of rectangles. We'll take a rectangle over here, thin rectangle. I'm not drawing a thin rectangle, but you get the idea that the rectangles are thin. The width of each rectangle is dx and the height of each rectangle is y. Now, how do we find out the area? We find out the area by summation of y into dx. Okay. Now, instead of doing summation, I do integration of y dx. How do I do integration? Now, I replace the value of y. How much is the value of y? I replace the value of y with x, so it becomes x dx. Now we have x to the power 1 dx, and we will apply this formula where n equals to 1. Now you must remember, मैंने आपको अभी क्या बताया, सारे values of n acceptable हैं except minus 1. तो ये minus 1 तो है नहीं, तो ये काम करेगा. The last step will be x का power 1 plus 1 upon 1 plus 1. That will be x square by 2. But this is not actually an area. In order to find the actual area, we have to use, the limits of it. The limits means कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं. तो हम 0 से लेके 5 तक जा रहे हैं. तो the value of x changes. The value of x changes from x equals to 0 to x equals to 5. The value of x changes from x equals to 0 to x equals to 5, and that's how we are. So if it is changing from x equals to 0 to x equals to 5, I will apply limits. This special thing is called as limits. आप 1/2 कॉमन ले सकते हैं. पहले अपर लिमिट डालो, minus lower limit डालो, substitute x first with the upper limit and then with the lower limit, and then you will get 25 divided by 2. That is exactly the same area by using integration formula. You see, we use three methods. First we use geometrical formula, then we use basic concept of integration, and then we used integration formula. And this is what integration means every time. Integration means that you are trying to find the area
of a graph or area under a curve. Okay? अभी जो लास्ट सेक्शन में आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अब हम चाहते हैं कि हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि हमें अगर कोई भी अजीब सी एरिया निकालनी हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स कंसिडर दैट वी हैव अ डिस्क and on this disk I'll divide my disk into 4 parts और मुझसे कहा गया कि डिस्क के किसी एक क्वाड्रेंट का, फॉर एग्जाम्पल दिस क्वाड्रेंट, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेंट। नाउ वन वे टू डू इट इज वेरी सिंपल कि हमें सर्कल का एरिया पता होता है तो हम उसे 1/4 से डिवाइड कर देंगे। बट हाउ आर वी गोइंग टू डू इट? यूजिंग इंटीग्रेशन, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। So if we want to use integration, we can start dividing it into smaller parts. That is the idea of using integration. कोई भी एरिया, कोई भी वॉल्यूम निकालने के लिए आप जो है अपने एरिया को, अपने वॉल्यूम को स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करना शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, और मैं नहीं कह रहा हूं कि ये एग्जाम्पल के अलावा आप कोई और एग्जाम्पल नहीं ले सकते। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, वी कैन डिवाइड आवर डिस्क इनटू थिन रॉड्स. We can divide our quarter disk into thin rods. That's one thing we can do. Think that it is not covered. Okay, we can divide our disk into thin rods. Now how do we find out the area of this disk? So first we'll move along y-axis. Let me use another color. First we'll move along y-axis and we will take a small width here, dy. And when you start dividing your disk into thin rods, आप देखोगे कि आपके rods की जो width है वो constant आप रख सकते हो, लेकिन आपके rods की जो length है वो vary कर रही है. The length of your rods is variable. So this is one important aspect of finding out the area. So now if you want to find out the area of, or if you want to find the area of this 1/4 of this disk, this blue region, all you have to do is sum the area of the thin rods. And how do you sum the area of thin rods? So let's consider this rod, the white one that we were talking about. The length of this rod is x. Let me mark this. The length of this rod is x and the width of this rod is dy. So the area of this rod is obviously x into dy. Now here is a problem. The problem is that we cannot integrate x and dy because we know only integrals in one variable, or we can do only integrals in one variable. So this is not possible to do. This is not possible. Okay, so what do you do if it is not possible? You apply another approach. What do? You try to find out a relationship between x and y, and the relationship between x and y is fairly obvious in this case. आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा होगा. If this is radius r, then we can very easily say that x square plus y square equals to r square. So x square equals to r square minus y square, or x is simply equals to root under r square minus y square. Now I can write the area of the rod as root under r square minus y square into dy. And in order to find now the area of the quarter disk, all we are doing to do is integration of root under r square minus y square into dy. और मैं कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करूंगा? तो देखो y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है. अगर आप सबसे नीचे वाला रॉड लेते हो, ये वाला रॉड अगर आप लेते हो, तो आपकी y की वैल्यू है यहाँ पे 0, और अगर आप सबसे ऊपर वाला रॉड लेते हो तो आपकी y की वैल्यू है r. So the integration values will vary from y equals to 0 to y equals to r. और इस तरह से आप अपने क्वार्टर डिस्क का एरिया निकाल सकते हो, लेकिन मैं इंटीग्रेशन करूंगा नहीं. इंटीग्रेशन करना मेरा पर्पस नहीं है. अक्सर बच्चों के साथ ये लगता है कि इंटीग्रेशन कर लेना ही बड़ी बात है.
नहीं, इंटीग्रेशन के जो बेसिक्स, उसके जो पीछे सारी चीज आती है, उसके पीछे जो आप चीजों को अरेंज करते हो, अलाइन करते हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द इंटीग्रेशन इटसेल्फ, क्योंकि दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला. दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला. स्टैंडर्ड फॉर्मूला. तो आप अगर यहां तक पहुंच गए और आपको फॉर्मूला याद है, समटाइम्स इट इज नॉट अ फॉर्मूला बट इट इज अ सब्सटीट्यूशन, बट ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. लेकिन अगर आप यहां तक पहुंच गए तो फॉर्मूला लगाना या सब्सटीट्यूशन करना इज एन ईजी थिंग टू डू. दैट्स नॉट डिफिकल्ट. वॉट इज डिफिकल्ट इज वॉट कम्स बिफोर इट. तो मैंने अक्सर अपने अपने टीचिंग करियर के दौरान बच्चों को देखा है फंसते हुए इसमें, और उन्हें लगता है कि इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है. इंटीग्रेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम. इंटीग्रेशन फॉर्मूलों से होता है. फॉर्मूला याद है तो इंटीग्रेशन हो जाए. इंटीग्रेशन के पहले की जो सारी चीजें अरेंज करना है, स्मॉल पार्ट्स में कैसे बांटना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. So this is one aspect I think where you can learn how to distribute things into smaller and smaller parts, और हम इसमें बहुत सारे questions आगे करते रहेंगे. So this is your basics of integration. Thank you very much. Have a good day everyone.